Hi everyone, how are you? A very good morning, good afternoon, good evening to every one of you. I'm very grateful for all your support, your likes, and your views. You are sharing the videos very nicely with everyone. Very much thank you and grateful to you all. Today my video is about some numbers which I would like to tell you. हम जो भी हम पैदा होते हैं वी आर born on a certain date of a certain month in a certain year. So we have a very unique ID for ourselves, and that is our date of birth. The date of birth is very much important for us because that is the ID for us. हम उसी से हमारा एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी देखते हैं, and it has a lot of impact on our life. So it is not just a date of birth. In the date we see the single date on which you are born, the month, the year, then the total of that. All these numbers have different effects on our lives. The single date of birth, that is, suppose you are born on a 6th or a 16th or 26th, it gives you an impact on your personality. जो भी आपका पर्सनालिटी है लाइफ में, वॉट एवर यू आर, इट गिव्स एन इम्पैक्ट ओवर देयर. जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपके टैलेंट्स है, जो आपकी हॉबीज़ रहेंगी, तो वहाँ पर हमको वो सब चीज़ों की डिटेल्स मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी माई वीडियोज़ विच आई हैव शेयर्ड फ्रॉम डेट 1 to 31st ऑफ एवरी मंथ. तो वहाँ से यू विल गेट टू नो वॉट इज़ योर टैलेंट्स, वॉट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉट इज़ योर पर्सनैलिटी. Suppose one number, I will just tell you 1 to 9 in general. One number is ruled by the planet is Sun, and you know the Sun is the leader of our galaxy. So वो जो भी numbers 1 के अंडर में आते हैं, जैसे 1 हो गया, 10, 19, 28, these all numbers they will come under the influence of number 1, and that is governed by the Sun. So the Sun is the leader of all the planets, all the galaxies. It gives us energy, it is the life force. It daily gives us new creativeness, strength, stamina to ourselves. It gives us a good health. सो 1 नंबर के जो भी पर्सन रहते हैं, जो इस ग्रुप को, कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, समवेयर और दी अदर दे आर इन दैट इन्फ्लुएंस, और दे आर अंडर दैट थिंग्स रिलेटेड टू द सन. एंड वहाँ से हमको हमारी पर्सनालिटीज़ मीन्स दे आर अ बिट bold, ambitious, they want to prove themselves, they want to shine up. So like that 1 number people are there in their life. ये एक इम्पैक्ट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 10, 19 या 28 आता है. सो देयर यू कैन सी द नंबर 1. नाउ इफ़ इट इज़ अ डेस्टिनी, दैट इज़ द नंबर 1. सो वहाँ पर इट बिकम्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. डेस्टिनी के बारे में बहुत लोग नहीं बता पाते हैं वीडियोस में या समवेयर. वी विल डू द थिंग्स इन आवर कमिंग वीडियोस ऑल्सो. So destiny means you have to total up your date of birth with the month and with the year, total whatever it is. Suppose it is 19th of June 1973, तो आप उसको सबको टोटल मार के, अगर सपोज़ आपका 1 टोटल आता है उस चीज़ के लिए, 19th is not necessary, it can be 23rd of June. तो 23rd of June and the year, उसको 1971, 76, 84, 89, 1989, एनीथिंग, वो पूरे नंबर को जब आप टोटल करोगे तो 1 का टोटल अगर आता है तो दैट विल बिकम योर डेस्टिनी, दैट बिकम्स द लाइफ पाथ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. और वहाँ पर वो वाली चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर एक
सर्टन पीरियड के बाद में लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। और फिर आपको वहाँ से सन का जो हमारा रहता है, जैसे इट राइजेज इन द मॉर्निंग, इट इज़ हाईएस्ट इन द नून, हमारे ओवरहेड पे रहता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, एंड देन इट कम्स becomes mild in the sunset time. So that are the phases of life of the people who are born with the destiny number 1. सो 1 नंबर के जो डेस्टिनी के पीपल रहते हैं उनकी लाइफ में ये फेजेस आते हैं। एक साइकिल आएगा जब वो स्टार्ट करेंगे, एक साइकिल आएगा जब वो एकदम अपनी पीक पर रहेंगे, हाइट पर रहेंगे, और एक ढलने का भी उनका टाइम आता है। बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बिकॉज नेक्स्ट डे अगेन द अदर new life, new cycle will begin for them. So they should be more ambitious. That is why they have to be ambitious, so they don't give up hope. They are continuous in the cycle of growth. So this was for the destiny 1. Now जिस किसी की भी बर्थ डेट सेकेंड होती है, जैसे वी आर गोइंग टू द सेकेंड नंबर, जिसकी भी बर्थ डेट सेकेंड या फिर 11th या 20th of any month or 29th of any month, they will come under the group 2. So this will play a very important role for their characteristics, for their personalities, and even for their habits, their talents. So this will give them a very good results for their personality. They will be very emotional, they will be very creative, then they will be very much matlab sensitive to anyone, even the tone of anyone's voice, the behavior of anyone, they will be very sensitive. So this is their nature part. If we get the destiny number 2 for them, then what happens, उनकी अगर बर्थ डेट का जो भी बर्थ डेट है, अगर उसको हम टोटल अप करके 2 के ऊपर अगर उसकी डेस्टिनी आती है, so these 2 number people, they are basically ruled by the moon, and moon is the planet or the god of these 2 number people. And as you all know, moon has different phases. 15 दिन का उसका एक रहता है न्यू मून का फेस, और उसके 15 दिन के बाद उसका रहता है एक फुल मून का फेस. सो इन द सेम वे जो 2 नंबर के डेस्टिनी के पीपल होते हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामास दे हैव टू फेस, रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल में या समवेयर और द अदर दे हैव टू फेस रिलेशन sensitive dramas, emotional situations come every time in their life, and they have to take a decision related to it. तो ये उनके लाइफ में चलते रहता है. बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वी हैव टू जस्ट कंसल्ट a proper numerologist for that to know in the details, because each and every number in your date of birth with the destiny number will matter over there. So you can just know a general thing ki how the number 2 destiny people will live in their life. So that will be for them. Now let's see the number 3 people. So number 3 people, they are very much bold, because in numerology I tell them as a prime minister. They have all the characteristics of a prime minister in their life. So if anyone's date of birth is 3, 12, 21 or 30 of any month, so their personality, their talents will be very much creative, ambitious. They will have all the knowledge, wisdom of in their field, and not only of their field, they will have the knowledge and wisdom of other fields also. They know how to manage, manipulate things. They are very good managers. They can conduct events, they can handle multiple things together. So in this way, because they are ruled by Jupiter, so basically wisdom is their most important life, we can say, life के लिए. So if their destiny number is also 3,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बर्थ डेट 3 रहे, बर्थ डेट कुछ भी रहे, अगर उसकी टोटल करके वो 3 पर आते हैं, सो वहाँ पर आपका सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक सर्टन आपकी लाइफ की पीरियड के बाद में उसका इम्पैक्ट स्टार्ट होता है। वहाँ पर इट विल बी कि समवेयर और द अदर you have to prove yourself, you have to express yourself in your life. You will not get things very easily, you have to put some efforts, you have to work for them, so that you will get the things for your life. So they are also ruled, the destiny number 3 people are also ruled by the Jupiter, and there it is ki you have to gain some wisdoms, gain some knowledge for yourself in that thing. So, this was some details about the destiny, which I will continue in the next series. We will continue with the other numbers. So, just tell me, how are you? How did you like the ambience behind me? And you will enjoy the video also with it. So, I love you all. Just keep on subscribing my channel like that. I will introduce myself. I am Jayashri Agrawal. I am a numerologist, tarot card reader, gemologist, clinical hypnotherapist, a life coach, and into many other healing modalities. I have a lots and lots of varieties of gemstones, crystals, healing crystals, and many other things which I would like to share with you all. I just need your comments, your sharings, and to subscribe my channel, like the video, and love you all. Thank you.